I'm going to explain what is acid, base and salts. This is a class 10th topic, and this is a very important topic also because acid, base and salts, these are a very important category of compounds which you have to read very carefully so that you might not face any type of problems in your further studies, further classes. So acid, base and salts, we will define and analyze each of them step by step. So first we will start with acids. Acids are such type of compounds which are generally sour in taste. It is a property of acids. There are many properties of acids, and the properties of any substance becomes its definition. The definition itself comes from the characteristics of the substance, characteristics of the object. किसी भी सब्सटेंस की जो डेफिनेशन होती है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से डिराइव की जाती है. जैसे एसिड्स होते हैं तो इनकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टीज दीज आर डिफाइंड. सो द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट in this definition is compounds. You have read earlier in class 9th that there are many types of substances, mixtures, compounds, homogeneous mixture, heterogeneous mixture, compounds, and the definition itself possesses words compounds. What is mean? Acids are compounds. In the definition of compound, compound means elements are combined in definite proportion. Definite proportion. It is a very important phrase in the definition of compound. In the definition of compound, definite proportion is a very important phrase because when elements gets combined in definite proportion, then only compound gets formed. Because example, H2O, the water collected from anywhere in the world has this proportion that two atoms of hydrogen and one atom of ऑक्सीजन. जब दो हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम आपस में कंबाइन होता है, देन ओनली H2O गेट्स फॉर्म्ड. इफ दिस प्रोपोर्शन गेट्स डिस्टर्ब्ड, इफ you combine two hydrogen atoms with two oxygen atoms, then H2O2 will get formed, and H2O2 is hydrogen peroxide. It is hydrogen peroxide which has drastically different properties, characteristics compared to H2O. H2O is a water which we use in daily life, but H2O2 is a compound which cannot be used in place of water. So mere difference of one oxygen atom makes the substance completely different. So you have to use a word compound. So first of all, acids are compounds which are sour in taste, but as we go further, there will be different types of properties of acids, and we will be able to define acids on the basis of many concepts. So in this regard, there are three types of concepts by which we define any acid or base. So first of these concepts is Arrhenius theory, second is Lowry-Brunstad theory, third is Lewis concepts. These are the name of scientists who gave this theory, according to which the acids, base and salts have been defined. So we will first start with Arrhenius theory. Arrhenius theory, according to this theory, acid is a substance
which gives H plus ion when dissolved in the water. Acid is a substance which gives H plus ion when dissolved in the water. ऐसा सब्सटेंस जिसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें, वाटर में उसको घोला जाए, देन वो H प्लस आयन सॉल्यूशन में देता है. H प्लस आयन वाटर में फ्री होता है. एग्जाम्पल्स ऑफ सच टाइप ऑफ एसिड्स आर HCl, H2SO4, acetic acid. This is the formula of hydrochloric acid, this is sulfuric acid, and this is acetic acid. These are all the acids which give H plus ion in the water. When dissolved in the water, they give H plus ion. The dissociation equations are important because they are they show the dissociation of the acid in the water. HCl when dissolved in the water, this water at the arrow mark symbolizes that acid has been dissolved in the water. When HCl gets dissolved in the water, it furnishes H plus ion and Cl minus ion. Note this point. HCl, what is the quantity of HCl? There is no any mathematical sign before the HCl. When no any mathematical sign is before the HCl, then we have to assume always 1. If there is no any mathematical sign before the any compound, then you have to assume it as 1. This 1 is symbolic form of mole. This 1 denotes that 1 mole of HCl has been dissolved in the water, by which 1 mole of H plus ion and 1 mole of Cl minus has been gained. 1 मोल HCl आपका वाटर में डिज़ोल्व किया गया, 1 मोल HCl के डिज़ोल्व करने पे 1 मोल H प्लस मिला और 1 मोल क्लोराइड आयन भी मिला. Now same case H2SO4, this is the second example. In case of H2SO4, when H2SO4 gets dissolved in the water, it also gives H plus ion. When H2SO4 gets dissolved in the water, it also gives H plus ion. H plus ion and HSO4 minus ion. You have to go in the structural formula of H2SO4 to better understand how H plus ion and HSO4 minus ions are produced when H2SO4 is dissolved in the water. Now HSO4 will again dissolve in the water, will again dissociate in the water to give another H plus ion and SO4 2 minus ion. This is known as sulfate ion. It is also known as sulfate ion. It is also known as sulfate ion. Now adding both equations, we will gain the complete dissociation equation. We will gain complete dissociation equation, which is H2SO4 when dissolved in the water gives H plus and SO4 2 minus. Note here, 1 mole of H2SO4 is being dissolved. 1 mole of H2SO4 is being dissolved in the water to give 2 mole of H plus and 1 mole of sulfate ion. It is a very important point, will be used in further classes as in 11th and 12th in stoichiometry. Stoichiometry is a separate topic in which calculations based on chemical reactions are studied. So there you will be using this concept that when we dissolve 1 mole of H2SO4, then 2 moles of H plus ion and 1 mole of sulfate ion is gained. I will explain the theory of dissociation, how H plus gets dissociated in the water. I will explain this theory briefly. So very few concepts which are relevant for your 10th standard will be explained. Now there are some rules. You have to memorize these rules and work on these rules, study them, work on them. If any doubt, then I will resolve your doubts. The first rule is
each atom has a tendency to release or attract electrons. जितने भी एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में होते हैं, सारे एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि या तो वे इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर रिलीज करते हैं, दूर भेजने की टेंडेंसी रखते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं. द एलिमेंट्स विच आर having the property to attract the bond electrons, the elements which have the property to attract the bond electrons towards itself, ऐसे एलिमेंट्स जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचते हैं, आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है. ऐसे एलिमेंट्स जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखते हैं आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. Fluorine is the most electronegative element of periodic table. You will be having a brief knowledge of periodic table in which you know that there are halogen atoms in the periodic table: fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. These are the halogen elements, halogen atoms. The first element of halogen family is fluorine. Fluorine is the most electronegative element of periodic table. Very briefly, you have to memorize one concept that fluorine is the most electronegative element of periodic table. After that comes oxygen and nitrogen. Nitrogen and chlorine sometimes have comparable electronegative values. The electronegativity of nitrogen and chlorine are comparable. There is no much difference in the electronegativity of nitrogen and chlorine. So here is a decreasing order of electronegativity. I have explained it as a definition that decreasing order of attracting the bonded electrons. These are the elements which attract the electrons, which attract the bond electrons. If these elements are present in the compound, अगर ये एलिमेंट किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो ये जिस भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो ये उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स ड्यू टू विच चार्जेस गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर. एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट्स की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होने लगती है. जैसे ही ये एलिमेंट्स किसी अदर एलिमेंट्स से बॉन्ड के थ्रू कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, वैसे ही बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींचने लगते हैं. बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की वजह से एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं, जिससे चार्ज की शिफ्टिंग डेवलप होती है. चार्ज की शिफ्टिंग पोलराइजेशन डेवलप करती है. It is a very important point in the theory of dissociation. Taking an example of H2SO4, I will explain how hydrogen gets dissociated when H2SO4 is dissolved in the water. In this compound, this is the structural formula of H2SO4. This is the structural formula of H2SO4. Here you will be aware of these bonds. These are the bonds. This is the single bond. This is the single bond formed between oxygen and hydrogen. This is the double bond which is formed between sulfur and oxygen. The detailed analysis of these bonds is in the chemical bonding chapter, but very brief knowledge about the bond formation I will make on an video on it. You will be aware of it, but very briefly you have to note it that single bond is comprised of two electrons. In the single bond there are two electrons. One electrons from one participating atom and the second electron is from second participating atom. These are the covalent bonds. Single bond, double bond, triple bonds, these are the covalent bonds in which sharing of electrons takes place. So this is I have marked it as 1. This is the second electron. First electron I have denoted it as hydrogen atom electron.
This is the electron which have been given by hydrogen atom for the sharing, and this is the second electron which has been denoted as cross. This is the electron from oxygen atom which have been donated by oxygen in the process of sharing. शेयरिंग करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने शेयर किया है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया है. With the two electrons, one single bond has been formed. Now, as I have said you earlier that oxygen has electronegative power. What is the electronegative power? Again, electronegative power of the element is to attract the bond electrons. These are the bond electrons. If oxygen will attract these bond electrons towards itself, then when oxygen will attract these bond electrons towards itself, then what will be the situation? So here are some rules, very simple rules. If any atom loses electrons, अगर कोई एटम जो है अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना मीन्स अपने सेल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देना, देन पॉजिटिव चार्ज कम्स ऑन इट. अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है. इफ़ एनी एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेल में बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को लाता है, देन निगेटिव चार्ज कम्स ऑन इट. तो एटम पे कैसा चार्ज आ जाता है? निगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि व्हेन एटम फेसेस पॉजिटिव चार्ज एंड व्हेन एटम फेसेस निगेटिव चार्ज. डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स एटम पॉजिटिव एंड gaining of electrons makes atom negatively charged. These are the two basic concepts, you have to note them properly. So if oxygen will attract these bond electrons, here I am using the word attracting, not completely gaining these electrons. Here one electron is from oxygen and one electron is from hydrogen. So if oxygen will gain both electrons, then one electron is from oxygen itself. एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ही है, तो इफ दिस इलेक्ट्रॉन विल कम टू द ऑक्सीजन, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास अगेन आ जाता है तो चार्ज में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ऑक्सीजन पे किसी भी तरह का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा. बट इफ दिस इलेक्ट्रॉन विच हैव बीन डोनेटेड बाय हाइड्रोजन कम्स टू द ऑक्सीजन, अगर ये इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन ने शेयरिंग के लिए दिया था, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाता है तो क्या होगा? ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्योर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन पे प्योर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. बट हेयर आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड कंप्लीटली लूजिंग और कंप्लीटली गेनिंग. Here I am using the word shifting. Oxygen has electronegative power. ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है जिसके थ्रू ये क्या करता है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, केवल खींचता है, ना कि पूरी तरह से उन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेता है. सो ऑक्सीजन विल अट्रैक्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स. इफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टूवर्ड्स द, if these electrons shifted towards the oxygen, then a partial positive charge comes on the hydrogen and a partial negative charge comes on the oxygen. This is the sign of partial. Partial means आंशिक, कुछ मात्रा में. This is the partial positive charge. ध्यान दीजिए, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचने के बजाय कैप्चर कर लेता तो हाइड्रोजन पे प्योर पॉजिटिव चार्ज आता, देयर विल नॉट बीन साइन ऑफ पार्शियलिटी, पार्शियल नेचर हैज बीन रिमूव्ड इफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स गेट्स कैप्चर्ड बाय ऑक्सीजन.
अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन कैप्चर कर लेता तो पार्शियल साइन नहीं होता, प्योर पॉजिटिव चार्ज आता। अगर ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेता तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आता, प्योर नेगेटिव चार्ज आता। बट देयर वी आर सीइंग दैट ओनली शिफ्टिंग ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, हेंस this shifting of electrons towards the oxygen will generate only partial positive charge on the hydrogen and partial negative charge on the oxygen. This generation of partial positive and partial negative charge is the basic reason for the dissociation, why compound gets dissociated when dissolved in the water. From the basic definition and the basic information about the generation of partial positive and partial negative charge on the oxygen and hydrogen atom, now there is a point to understand further. अभी तक जो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस कैसे डेवलप होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक होने की वजह से ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने लगता है। ड्यू टू दिस शिफ्टिंग ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नाउ इस पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के आने से क्या होगा, व्हाट विल बी द सिचुएशन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चेंज ड्यू टू जनरेशन ऑफ दिस पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सो when we dissolve H2SO4 in the water, when we mix H2SO4 in the water, then water molecules will surround the molecule of H2SO4. There will be a mixing, and you know that unlike charges attract each other. If there are charges which are opposite in nature, means positive charge attracts negative charge, negative charge attracts positive charge. So here you have to note very few points about the structure of water. There is one oxygen atom and two hydrogen atoms. By the basic definitions of octet rule, octet rule की basic definition से आप समझ सकते हैं कि you can understand the basic bonding process between the water atoms, between the oxygen and hydrogen atoms. There are 6 electrons in the last cell of oxygen. If you can do Bohr-Bury electronic configuration, so oxygen has total 8 electrons. On doing electronic configuration, we know that 2,6 will be the electronic configuration, hence the last cell possesses 6 electrons. And hydrogen, there is one electron in the last cell, which is the first cell of the hydrogen atom. There is only one electron, so one and one electron sharing will be there. So hydrogen wants to become like helium. This is a simple rule. You all are aware with this fact that hydrogen wants to become like हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम की तरह बनना चाहता है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस वजह से एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, हाइड्रोजन हीलियम की तरह बन जाएगा। एंड ऑक्सीजन वांट्स टू कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट सेल। सो आफ्टर शेयरिंग you can count the total electrons 1 2 3 4 5 6 7 8. There are 8 electrons, total 8 electrons, hence octet of oxygen is becoming complete. ऑक्सीजन का octet complete हो रहा है, तो this is the simple bonding. Now note these electrons. These are the electrons which are remained after making bond. These are the electrons which after making bond 4 electrons, it means 2 lone pairs are remained. इनको जो बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स अनबॉन्डेड बचते हैं एटम के पास, these are known as lone pairs. Simply you note these electrons as free electrons, unbonded electrons. इनको बोलते हैं unbonded electrons. और ये फ्री होते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया इन्होंने, that's why they can be attracted by any other atom or they can attract any other positive atom, because
इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, हेंस these negatively charged electrons will attract this partially positive hydrogen atom. हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से परेशान हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। टोटल केमिस्ट्री में देयर विल बी अ बेसिक पॉइंट कि चार्ज जनरेशन की वजह से हमेशा अनस्टेबिलिटी आती है। चार्ज जनरेशन, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा हो या फिर नेगेटिव चार्ज, दोनों ही तरह के चार्जेस के डेवलपमेंट की वजह से अनस्टेबिलिटी आती है। और जहां कहीं भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के कम होने की कंडीशन डेवलप हो रही हो, इफ देयर इज अ कंडीशन बाय विच पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इज गेटिंग रिड्यूस्ड, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कम हो रहा हो तो उसको स्टेबिलिटी के फॉर्म में देखा जाता है कि धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, तो अनस्टेबिलिटी का पूरा कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। अगर इस हाइड्रोजन को इस लोन पेयर से कुछ मात्रा में सपोर्ट मिलेगा, देन दिस हाइड्रोजन विल फील गुड बिकॉज these electrons are making a support to this hydrogen atom which has partial positive charge. So ultimately hydrogen gets detached from the H2SO4 and this H plus is surrounded by the water molecules, and there is a very important step that this H plus ion combines with H2O. This H plus ion gets combined with the H2O due to the lone pair of oxygen and makes H3O plus. This is hydronium ion. This is hydronium ion. You have to make this point very clear that in the solution, in the aqueous solution, जब कभी भी किसी भी सब्सटेंस को वाटर में पोर किया जाता है, वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, तो उसे हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो when H plus will be present in the aqueous solution, it will be in the form of hydronium ion. H plus का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता वाटर में। H plus वाटर के मॉलिक्यूल्स से कंबाइन होकर के हाइड्रोनियम आयन बनाता है, that is H3O plus. This will be the case. So now from this theory you can estimate how H plus gets detached and why we say that when acids are dissolved in the water, H plus gets produced. H plus produce होता है जब किसी एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं. Same will be the case when this hydrogen will possess partial positive charge, this oxygen will possess partial negative charge. In same manner, oxygen lone pair of H2O, lone pair of oxygen from the H2O will attract this H plus, and in same way from here also H plus will also gets furnished, H plus will also get produced. That this is the basic dissociation in the case of H2. Acetic acid, the formula of acetic acid is CH3COOH. This is the formula of acetic acid. What happens when we dissolve acetic acid in the water? Now analyze the case of acetic acid. So this is the dissociation equation. You have to note very carefully the dissociation equation of each acid, each base. This is very important, used in most of the questions. Hence the dissociation equation of acetic acid is like that. When acetic acid is dissolved in the water, then acetate ion, this is the formula of acetate ion, CH3COO minus, and H plus ion. These two ions are found in the water, in the aqueous solution. So by the first observation you see that there are 4 hydrogen atoms, 3 and this one, 4 hydrogen atoms here. Total H atoms are 4, but only one hydrogen atom, is furnished as, furnished means मिलना, अलग होना, प्राप्त होना. तो केवल एक H एटम H प्लस जो है H प्लस के फॉर्म में हमें केवल एक H एटम ही मिल रहा है. What is the reason why all the 4 H atoms are not getting dissociated? पूरे चारों के 4 H हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो
H प्लस के फॉर्म में हमें क्यों नहीं मिल रहे, जैसा H2SO4 में होता था। H2SO4 में कितने हाइड्रोजन एटम थे, देयर वर 2 हाइड्रोजन एटम्स, और दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम्स जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते थे तो दोनों हाइड्रोजन एटम H प्लस के फॉर्म में हमें मिल जाते थे। बट इन केस ऑफ एसिटिक एसिड देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला ऑफ द एसिटिक acid, but only one hydrogen atom is getting dissociated in the form of H plus. So analyze the case. This is the structure, chemical bond structure of acetic acid. Note it down very carefully. This is the structural formula of acetic acid. You will gradually know the structural formula of most of the acids, most of the compounds, but take up patience and gradually like that. Here I have tell you the structural formula of acetic acid, and in the previous lecture, in the just before, I have told you the structural formula of H2SO4. So one by one you will come to know the structural formula of most of the acids, most of the compounds. So here you have to make your step very gradually. So this is the structural formula of acetic acid. Now 3 hydrogen atoms are combined with the carbon, and 1 hydrogen atom is combined with the oxygen. In same case as discussed in H2SO4, there will be a partial positive and partial negative charge developed on the oxygen and hydrogen. But in this case, between carbon and hydrogen, no significant electronegativity difference is present. As I have discussed, what is the electronegativity? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत माइन्यूट होता है. There is no any significant electronegativity difference. Hence, इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ना तो कार्बन अपनी तरफ खींचता है और ना ही हाइड्रोजन. ड्यू टू दिस situation, there is no any generation of partial positive or partial negative charge on either of the atom. किसी भी एटम पे partial positive या partial negative charge develop नहीं होता. That's why hence no any partial charge is developed, hence no dissociation. कोई भी partial charge develop नहीं होता. Partial charge develop ना होने की वजह से कोई भी dissociation नहीं होता है. तो you have to note this point very carefully, that where partial positive और partial negative charge gets developed, जहां पर भी partial positive या partial negative charge develop होंगे वहीं पर dissociation का phenomena होता है. जहां पर भी कोई भी polarity नहीं होगी, charges develop नहीं होंगे, वहां पर कोई भी polarization ना होने की वजह से कोई भी dissociation phenomena नहीं होगा. तो this is the case of CH3COOH. So you have to make this point very clear, that from first observation you cannot predict that any acid, the how many H plus ions will be generated by the particular acid.